हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग फीट। अभी मैं हूँ एक नए ट्रिप पे जो कि मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग ट्रिप एंड इट इज़ टू ज़ंस्कार एंड लद्दाख। द प्लेस इज़ वेरी डिफरेंट, द रूट इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स अ लॉट ऑफ ऑफ रोड दिस टाइम एंड करेंटली आई हैव रीच्ड नियर कुल्लू। मैं निकला था दिल्ली से रात को 7:30 बजे, बहुत ज़्यादा बारिश में, और अभी मैं पहुंचूंगा जिस्पा, विच इज़ माय फर्स्ट स्टॉप। तो चलो आप रास्ता देखो कैसा है। Hey guys, so sorry for my messy hair that you're seeing. It's a result of wearing a cap for the entire journey from Delhi to Jispa. So this was the easy part of our journey and it's day one. We began at 9:30 or 7:30 yesterday, to be precise from my home at 7:30. Then I picked up my friends. So it was a long journey, but we chose Jispa so that we can achieve our acclimatization goals before we head to Zanskar and further to Leh and Ladakh. Now the weather is pleasant here. It's daytime and it's pleasant. However, during the night it will be cold. It will be Delhi type of cold, but not typical Himachali winter weather. Now the camps, as I told you, are Jispa journey camps, and they are besides the Bhaga river. It's a very beautiful view here, and the camps are relatively new. There are some improvements that can be done with respect to the quality of the insides. I would say the insides of the camp, and now I'm going to have lunch there, and I'll give you the feedback for the lunch. Meanwhile, I'll just show you how it looks, around here. You can see the Bhaga river flowing there. Now, when I said the easy part was day one, tomorrow we are heading via Darcha towards Purne. We will be camping using our own tents. Tomorrow we'll be cooking our own food. We'll be making all our arrangements ourselves. It will be a self-sustained stay and probably did the whole day. So I'll show you the room now, and then I'll give you the food review. So starting with the room, here is a little sitting area which is covered in case you don't want to sit inside yet, want to sit and have a look outside the tent. And this is the inside of the tent. It's spacious, it's kind of cozy. There's a double bed with a table, an extension socket, and a bathroom. This is the bathroom. So that's the cozy tent that we have. So feedback on the food, it was not that great. It was okayish. So bottom line, we are hungry and now we are cooking our own stuff. Here it is. We have ginger also. Yeah. Hey guys, welcome to day 2 of the Zanskar Ladakh series. Now I will be checking out with my friends from here today.
we have another group of people that will be joining us. They were supposed to come with us, they were supposed to tag along, but they could not do so. तो अब वो हैं सोलांग में, सोलांग से वो आएंगे इधर और हम फिर जाएंगे ज़ांस्कार वाया दाचा। अभी कहाँ जाना है वो डिसाइडेड नहीं है, हम अपना खुद का कैंप लगाएंगे और जहाँ पर भी अंधेरा होने से पहले हम कैंप लगाने पहुँच सकें तो वहाँ पर हमारा स्टे होगा। तो इट कैन बी करगियाक, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, कुर्गियाक और पूर्णे। सो विल सी हाउ इट इज़। एंड वन मोर थिंग, मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं था। वी गेव देम द फीडबैक एंड जो डिनर था कल का, इट वाज अमेजिंग। सो क्रेडिट देना बनता है जहाँ ड्यू हो। अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने और फिर यहाँ से मैं चलता हूँ। चलो। सो गाइज, ब्रेकफास्ट वाज गुड एंड नाउ वी आर प्रिटी लेट, इट्स ऑलमोस्ट 12। We have to go towards Pune and we are starting out now. टायर चेंज करना पड़ा था, टायर में एक बल्ज आ गया था। आपको वो मज़दूर वाली काम दिखाया नहीं मैंने, तो चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ ज़ांस्कार। Guys, I am at the border of Himachal and Ladakh. Off-roading completely and 4x4 यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि बर्फ़ पड़ चुकी है। It's gotten quite slippery. तो वैसे जनरली 4x4 की ज़रूरत नहीं होती है, but it's just not possible without that. तो अब क्या चल रहा है कि you can see that nothing is visible. It's all clouds and fog here and snowfall, as you can see. It's medium quantity snowfall. So अब हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। As I told you before, so enjoy the visuals and please comment how did you like them. So guys, an add-on to what I said, apart from being at the Himachal and Ladakh border, we are also very near Shinkula. अब यहाँ से I think it will be all downwards. The journey, that is, not the journey, the path will be downwards and let's see how it is. The altitude at which I am right now, it's 15,819 feet. ब्रेथ थोड़ी ज़्यादा चढ़ रही है सांस, क्योंकि हमें एक्लेमेटाइज करे हुए एक दिन हुआ है। जिस्पा में we did acclimatize, we did face some problems and now we were okay with the Jispa level of altitude. However, 15,819 feet, I don't know how it will fare with us. It will fare well or it will not. So वो तो आपको दिख ही जाएगा व्लॉग में, तो देखो आगे।
guys, I'm here just beyond Shinkula and before Kurgyak camping grounds. You can see how it looks. Did a major river crossing after crossing Shinkula, and there the route on the way is quite dangerous. There are continuously falling rocks. Now, as per the time, it's 4:38 now. As per the time, it will take us 2 more hours to reach Purne, which is, I think, just borderline touching the time when there will be, no sunlight left. So just had something here that you see. Just had some little bread omelette, Maggie and chai thing here. और अब हम चलने वाले हैं यहाँ से पुणे की ओर. हमारे जो खोए हुए दोस्त हैं, जो 2 दिन से खोए हुए हैं, हमसे कोसों मीलों दूर पीछे, उनकी हम वेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि धीरे चलें. बट लेट्स सी व्हेन दे कैच अप विद अस एंड लेट्स हेड टू पुणे नाउ. Kurgyak check post for a COVID screening. Even though आपके पास डबल वैक्सीनेशन हो या फिर आप as recent as 1 day before वाला COVID negative certificate लेके आए हो, still you will be rapid tested here. And it's getting really dark. We are pretty late. हम कभी रुक गए मर्जी से, कभी हमारी गाड़ी का वाइपर काम करना बंद कर दिया. So presently the car wiper is not working. And अब हम देखते हैं हम कुर्ग्याक में रुकेंगे या पुणे में रुकेंगे. पुणे इज़ 25 किलोमीटर फ्रॉम हेयर. अब जैसा भी होगा आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में. ओके. सो इट गॉट डार्क एंड नाउ आई एम हियर एट कुर्ग्याक इन अ होम स्टे वेयर आई एम पेइंग 400 रुपीज़ without food just for stay. Our long lost friends have not yet caught up with us, so I'll update you on that part. So I'll see you tomorrow now.